वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दिस इज कृष्ण कुमार फ्रॉम टीम ब्लू आइस। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिसाइज। राइट, ग्रामर काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने ग्रामर में। अब थोड़ा डिफरेंट उस ग्रामर का यूज़ कैसे कॉम्प्रिहेंशंस में लाना है, हम आज प्रिसाइज में पढ़ेंगे। प्रिसाइज, अनसीन पैसेज एंड ऐसे, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आज आपकी एग्ज़ाम के जो ध्यान में रखते हुए आज हम पेपर है आपका 2014 का, उसको डिस्कस करेंगे प्रिसाइज। राइट, वैसे प्रिसाइज आपने अटेम्प्ट किए होंगे, अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो इट्स ओके। अगर नहीं किए, आपका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसे करना कैसे है प्रिसाइज, शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा नोट मेकिंग। सो दिस इज़ लिटिल सिमिलर टू दैट थिंग एज वेल। उसमें क्या होता है, हम पहले नोट्स बनाते हैं। राइट डियर एस्पिरेंट्स, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है। पहला, आपका वोकैब, जितनी अच्छी वोकैब होगी उतनी अच्छी आपकी समझदारी होगी। राइट, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ तभी पाओगे जब आपका वोकैब अच्छा होगा। दूसरा चीज़, आपको उसको एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन है क्या, कॉम्प्रिहेंशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है हमें, कितना अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। तो आपका ग्रामर और वोकैब दोनों मिलकर यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को इम्प्रूव करेगा डियर एस्पिरेंट्स। राइट, तो आज हम इस प्रिसाइज को इस तरह से करेंगे, इसमें कैसे नोट्स बनाने हैं, हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लानी है। राइट, सो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं प्रिसाइज वैसे तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि कैसे हमें इसे अटेम्प्ट करना है। राइट, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट, मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। प्लीज डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, प्रिसाइज शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये 1/3 में होना चाहिए। राइट, इसको ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना हमें और ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स उसमें डिडक्ट होंगे हमारे। क्लियर डियर एस्पिरेंट्स? और दूसरा, हमें इसमें टाइटल नहीं देना। क्लियर? एंड जो प्रिसाइज लिखेंगे हम उनके वर्ड्स को नहीं यूज़ करना है, हमें अपने खुद के वर्ड्स यूज़ करने हैं, हमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। राइट, तो इसमें जो रोल होगा हमारा वोकैब का, हमारी ग्रामर का, जो भी अभी तक हमने वोकैब पढ़ा है, अभी ग्रामर जो भी हमने पढ़ा है, उनका यूज़ किस तरह से होगा इसको अंडरस्टैंड करने में, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट दिस। क्लियर डियर एस्पिरेंट्स? तो इस पैसेज को पढ़ते हैं, इसको नोट्स हम साथ साथ बनाते चले जाएंगे, उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे। अंडरलाइन करने के साथ साथ फिर इनके पॉइंट्स बना के हमें ऑन लैंग्वेज में लिखना है। डियर एस्पिरेंट्स, आई वुड अगेन टेल यू दैट वहाँ पर हमें इनकी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है, हमें अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। क्लियर? और 1/3 मीन्स दैट अगर ये 600 वर्ड्स का है तो इसको हमें 200 वर्ड्स में लिखना है। 10-5 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रिसाइज को। अगेन इट इज़ क्वेश्चन हियर, मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। प्लीज डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, प्रिसाइज शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज। राइट, सो दिस इज ऑफ 75 मार्क्स। क्लियर? तो कैसे 75 मार्क्स आप लाएंगे? सिर्फ 200 वर्ड्स लिखने में ही, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लेंथ है, यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत में देखिए जो हमें मेन पॉइंट्स है उसी को हमें क्लिक करके उसे अंडरलाइन करना है डियर एस्पिरेंट्स। फिर उन अंडरलाइन सेंटेंसेस को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, उसी से हमारा प्रिसाइज क्लियर होगा। क्लियर? तो अगेन आई वुड से ये हमारा एक टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है। यहाँ पे हमें इसको कितने अच्छे से समझा है ये हमारा डिपेंड करता है कितनी हमने इसकी प्रैक्टिस की है। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, इसको अटेम्प्ट करते हैं। इफ दिस सेंचुरी हैज़ इन द फेमस फ्रेज मेड द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। राइट, तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, अंडरलाइन करना है, देन उसको नोट्स बना के हम उसको यूज़ करेंगे डियर एस्पिरेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है मेड द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, ये काम उन्होंने कर लिया है। द नेक्स्ट चैलेंज इज वॉट, बिकॉज वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एज वेल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है जो हमने अचीव कर लिया है, दिस इज, एंड जो अचीव करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैलेंज जो है वो हमारा अचीव करने के लिए है, तो दैट इज व्हाट, मेक अ वर्ल्ड सेफ फॉर डाइवर्सिटी। राइट, तो ये पॉइंट्स हम जब नोट्स कर रहे हैं, यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्हीं का यूज़ करते हुए हम अपना प्रिसाइज को आगे बढ़ाएंगे। राइट, इट इज़ इन इंडियाज इंटरेस्ट टू एंश्योर दैट द वर्ल्ड एज अ होल मस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट इज already familiar to all Indians. What is familiar to all Indians? That democracy, diversity, right? So that should not matter what the color means. This is very important thing here, that we are just talking about the diversity in India, we are talking about the diversity in the world as well, right? So that it shouldn't matter what the color of your skin,
This is very important for our diversity and the democracy as well. The kind of food which you eat, the sounds you make when you speak, and the God you choose to worship, means that religion. Clear? So we have to understand this thing. So long as you want to play the same, means they are talking about the dream. Dream must be single. Dream, that same dreams, right? Everybody. So everybody must have the same dream. So how would we have the same dream if we are following the same thing in our country? It is not essential in a democratic world to agree all the time. बिल्कुल सही बात है. As long as we agree on the ground rules of how we will disagree, these are the global principle we must strive to uphold if you are to be behold, or you are to be able to continue the uphold that surely at home. So these are the points on which we can just focus and get our precise essay. We want a world that gives us the condition of peace and the security will permit us to grow. So we are talking about the peace and security. So how can we have the peace and security? So condition of the peace and the security that will permit us to grow and flourish, safe from the foreign depredation, right? Safe from the foreign depredation, but open to external opportunities, right? We have to think about the depredation from the outer side, and we have to give them, or we have to have the open external opportunities as well. For means that this is showing the rule of globalization, right? Whether global institutions, whatever you want to use, anything can be used here. Whatever global institutions adapt and revive will be determined by whether those in charge are capable of showing the necessary leadership, right? Right now many of us would suggest that there is a global governance deficit, that is also very important. Governance deficit, reversing it would require strong leadership. Very important thing is what would require strong leadership. If you have very strong leadership, so you will be able to lead the world, right? So you need to be very good leader, you need to be the strong leader. Clear? In the international community, means that leadership not in a country only, leadership must be in the world, means the international community on which people can believe by a number of powers, including the emerging ones. India is an obvious contender to provide some of the leadership. Yes, exactly. India has got the chance to show its leadership, so that is why India should aim at just being powerful. So that must be the India's aim. What is that? Being powerful. It should set an standard for what the powerful must do. So if we are just setting this aim, so we will be able to achieve this aim. This is a huge challenge, and one of to which India must rise. An analogy from another field is not encouraging. Many would argue that India has not acquitted itself well when given the chance to have the global impact in one, right? So India has got the chance to just prove itself. That is the domain of what? Cricket. Everybody knows the place of cricket in the world. So more than 80% of the game's revenues and the perhaps 90% of its viewership is from India. You cannot imagine this, right? So this is the matter of fact. So यहाँ पर ये points बहुत important है जो हम यहाँ discuss करेंगे, dear aspirants. Given it an impact on the sport that no country can rival. इसमें हमारी कोई country rival है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो revenue generation है, means that revenue जो generate हो रहा है वो 80% India दे रहा है, 90% हमारा viewership है. So you can imagine yourself that this shows the leadership in the world. Clearly, international opinion does not believe that in its domination of world cricket, India has set new standard for what the powerful must do. Right? Apart from this, plenty of other things are also there where India is working. Broadening the analogy to global geopolitics,
one could well say, India, your world need you. India, your world needs you. What? India just want to seek the help of India now in many other fields. So India must play its due part in the stewardship of the global common. So this is also very important part. What is that stewardship? Right? So stewardship of the global commons, including everything from the management of the internet to the rules governing the exploitation. That is very important point. The exploitation of outer space using internet, management of internet. So these are some very important points. We can do it. India is turning increasingly outwards as a result of our new economic profile on the global stage. Whatever India is doing on the global stage, it is really very appreciable. People are just appreciating India in terms of this all over the world. Or our more dispersed interests around the world, and the reality that other countries, means that actually it is showing the powerful image of India in the terms of in other countries in our neighborhood as well as in Africa. Means that is very important. Where is that impact being shown? Not only in neighborhood countries but also in Africa as well, are looking to us for support and security. Peace and security, here they are just asking the support of and the security. India has the ability and the vision to promote global partnership. Yeah, exactly. India has the ability. That is why people are just asking what help from us, and we are just supporting them. So very good example is Africa here, and the vision to promote global partnership across the broad range of its interest. It only needs to act. The world economic crisis should give us an opportunity. Means that we are just asking for that opportunity, right? And that is very important for us to understand. To promote economic integration with our neighbors in the subcontinent, who look to you governing Indian market to sell their goods, right? Many people are just thinking to start leadership and working with the Indian market, or in Indian market they want to start their business with, to sell their goods and maintain their own growth. But as long as South Asia, but one side whole world is just with us to give the opportunity and to have our support, like Africa and some are neighboring countries as well. But if you talk about the South Asia, so this has a different opinion. So South Africa remains divided by futile rivalries, right? So they are just thinking about this, and some continue to believe that terrorism can be useful instrument of their strategic doctrines, but that is wrong. So this is very important part which must to be declared and which must be used here, right? Useful instrument they are thinking, but it is not. That is bound to remain is distant prospect. We in South Asia need to look to the future, to an interrelated future on our subcontinent, where geography becomes an instrument of opportunity in a mutual growth story, where history binds rather than divides. Means that we need to think about the past and we need to seek the opportunity from there only. So this is also very important, where history binds rather than divides. Means that you just search the history, you will find that we had been very good friends of each other, but now you are just dividing us on the name of terrorism and all. That's not good. Where trade and cross-border links flourish and bring prosperity to all of us and all of our people. So these are some important points, dear aspirants, which we just discussed here in this, right? And on the behalf of this we can understand the concept of this. And now आई वुड से जो भी हमने डियर एस्पिरेंट्स इनको नोट्स किए हैं, देखिए जितने भी हमारे रेड पोर्शन हैं यहाँ पर शुरू से देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे देखिए जितने भी ये हमने मार्क किए हुए हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए हमें डियर एस्पिरेंट्स अगेन आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रिसाइज शुड बी रिटन इन ऑन ऑन लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज को हमें यूज़ नहीं करना है और अपनी ऑन लैंग्वेज में इनका यूज़ करना है, ऑन लैंग्वेज में इसको समझाना है जो भी हमें समझ आया, राइट।
तो यहाँ पर आपका समझना ही सब कुछ है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट मीन्स दैट इट इज जस्ट checking your understanding power. If you are understanding this concept means that you will be able to write well, otherwise you won't be able to write. Clear? तो यहाँ पर जो भी हमने पॉइंट्स देखे हैं डियर एस्पिरेंट्स, उन्हीं को हमें यूटिलाइज करना है. मेड द वर्ल्ड सेफ एंड सेफ फॉर डेमोक्रेसी मीन्स दैट वी हैव मेड दिस एंड वी आर जस्ट मेकिंग safe in the diversity as well, right? And we are just working as a leadership, we are just working in a leadership as well. तो ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स डिस्कस करना है. व्हाट द कलर ऑफ स्किन मीन्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, हमें लगे, और वो हमें नोट्स करने हैं, और उन्हीं नोट्स को हमें यूज़ करना है अपनी समरी में, मीन्स दैट इन प्रिसाइज में. जब आप प्रिसाइज लिखेंगे तो इनको हमें अंडरलाइन करके, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे स्लाइड्स पे यूज़ करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इफ़ आई जस्ट गो थ्रू विद दिस प्रोसेस, राइट. लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, अंडरलाइन ये हमारे लाइन्स होंगी, और इन अंडरलाइन लाइन्स को नोट्स कहते हैं, और इन नोट्स का यूज़ करते हुए हम अपनी ओन लैंग्वेज में समरी लिखनी है डियर एस्पिरेंट्स. इनके हमें सेंटेंस मेकिंग यूज़ नहीं करनी है, इनके सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, हमें खुद के सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे, राइट. जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये लगभग नोट्स हमारे 200 वर्ड्स का एक बढ़िया ऐसे लिखने के लिए काफ़ी होंगे, राइट. तो यहाँ पे मैंने इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, इन नोट्स को यूज़ करते हुए कुछ लिखा है. दैट इज़ व्हाट आंसर अप्रॉक्स 200 वर्ड्स. जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है 603 वर्ड्स. तो 603 वर्ड्स का जो 1/3 होगा डियर एस्पिरेंट्स, वो होगा हमारा अप्रोक्स 200. मीन्स से 210 भी हो सकते हैं, 200 अराउंड 13-14 भी हो सकते हैं, और 190 के अराउंड भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हमारा एग्जैक्टली 200 होंगे, एक नंबर कम और एक नंबर ज़्यादा, मतलब आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत. इतना भी नहीं कि किसने 200 बोला है तो आप 250 का लिख रहे हो या 300 का लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, राइट. अगर आपको बोला 200 को और आप 100 लिख रहे हो या 150 लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स दिखे जाएंगे, आपके डिडक्ट होंगे फिर, राइट. तो हमें ज़्यादा भी नहीं लिखना इतना, और कम भी नहीं लिखना है, राइट डियर एस्पिरेंट्स. तो इस पर हमें वर्क करना है. दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन. देखिए अब इसका निचोड़ क्या है, इसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है. वर्ल्ड हैज़ बीन सेव्ड फॉर डेमोक्रेसी मीन्स दैट वी हैव जस्ट डन दिस, वी हैव अचीव्ड दिस, एंड नाउ दिस इज द टाइम. Now this is the time to save this for diversity. Indians are already ensured for this. Their food, what they eat, how is their skin, how do they sound, their religion, etc. Right? Must not matter. Right? Everybody must have same dream and same dream for democracy. Means that अगर हमने ये achieve कर लिया तो हमारा same dream होगा democracy के लिए. If these things are implemented there will have to have peace and security. If we are just maintaining this, there is no harm, there is no anonymity, so we will definitely go through this process, that is peace and the security. That is only presence in our democracy and diversity in a democracy. Save the country from foreign spoliation but open to outside opportunities as well, right. हमें अपने को सेव करना है, और अपने को सेव करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करना है, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है. जो एमएनसीज आज हमारी इंडिया के अंदर है, या जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो बाहर जाके डील कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड दिस अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल लॉस डिमांड्स रोबस्ट लीडरशिप. इंडिया शुड फोकस टू बी स्ट्रॉन्ग. दिस इज बिग चैलेंज फॉर इंडिया. India has got this chance to show its power. Means that we just discussed there. India has been given opportunity to prove where it has shown with more than 80% of game revenue and 90% of viewership. Means more than 80% game revenue हम देते हैं और 90% around 90% of viewership हमारी होती है. It has proved India's effect in the cricket. Right? It is sufficient for us to show the effectiveness and domination in terms of cricket and in terms of leadership. Now India is to play its remaining part from management to internet to the governing the exploiting of outer space. Our neighboring countries and Africa are willing to seek our support. Right? Means that our कुछ हमारी neighboring countries और अफ्रीका दोनों ही चाहते हैं, कुछ ये चाहती है countries कि हम इनकी support करें. They are just asking for our support. World economic push ought to give us chance to demonstrate economic integration.
राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक में भी हमें चांस दिया जाना चाहिए, इसमें भी तो इंटीग्रेशन दिखाने के लिए। नाउ ग्रोइंग इंडियन मार्केट टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स टू एंड सर्विसेज, साउथ एशिया रिमेन्स डिवाइडेड टू वर्थलेस राइवलरीज। मीन्स वन साइड तो पूरा वर्ल्ड मीन्स दैट अफ्रीका और हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई है और हमारी सपोर्ट के लिए चाहती है कि हम उनको सपोर्ट करें, और दूसरी साइड साउथ एशिया में कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ है जो नहीं चाहती इस चीज़ को। दे आर डिवाइडेड बट बाय वर्थलेस राइवलरीज, सम सपोर्ट टेररिज्म, कीप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मीन्स दैट वी नीड टू लीव दिस, we need to keep mutual understanding and growth story where history unite us rather than divide, right? If you study these things, so dear aspirants, you will be able to clear this precise, that is very easy and difficult as well. ये difficult इसलिए होगा कि हमें समझ नहीं आया, difficult इसलिए होगा क्योंकि हमारी vocab अच्छी नहीं है, difficult इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने grammar portion पे work नहीं किया। तो dear aspirants, जो हम grammar portion कर रहे थे उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ हमारा वोकैब ग्रामर और दोनों का एक साथ प्रोग्राम भी चलेंगे। वोकैब की भी कुछ वीडियोस हम डालेंगे, वोकैब के साथ ग्रामर का पोर्शन मैंने काफ़ी कुछ दे दिया है, जिसके बिहाफ पे आप डियर एस्पिरेंट्स इन चीज़ों को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ हम ऐसे भी डिस्कस करेंगे, मीन्स दैट प्रिसाइज, एसे एंड अनसीन पैसेज, दीज विल बी दी मेन कंसर्न फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट। तो आज के बाद हम तो कुछ वीडियोज़ इन्हीं से रिलेटेड भी डालेंगे, चाहे जैसे अभी हमने प्रिसाइज का डिस्कशन किया, और आगे हम फिर हो सकता है कुछ ऐसे के लिए लेकर आए जाए, या फिर हम जो है आपके लिए अनसीन पैसेज वगैरह कैसे सोल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, उन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ अगेन आई वुड से हमें ग्रामर का जो भी हमने वीडियोस क्लिक किया है, जो भी हमने वीडियोस डाला है, उनको आपको गो थ्रू होना है, क्योंकि उनके बिना आप लिख नहीं पाओगे अच्छे से। और इनके साथ साथ हमें यूज़ करना है वोकैब का। वोकैब हमें कुछ डिफरेंट मीनिंग्स देगा, जिसे हम डिफरेंट वेज मिलेंगे लिखने के लिए। और डियर एस्पिरेंट्स, तभी मैं बोलता हूँ जिसने भी हमारे वीडियोस नहीं देखा है उसके लिए उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पीछे जितने भी हमने वीडियोस डाले हैं उन्हें उनको यूज़ करना पड़ेगा, उनको देखने के बाद फिर प्रिसाइज आपको इजीली समझ आएगा, राइट डियर एस्पिरेंट्स। सो आई होप कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, राइट, और शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लू IAS।